हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं अथीरापल्ली से मुन्नार। तो ये एक रूट है जो उसको बोलते हैं कोची साइड रूट। इस जगह पे जो भी साइट सीइंग की चीज़ें हैं मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जो पहली आइटम हमारी लिस्ट पे है वो है चियप्परा वाटरफॉल। तो पहले हम लोग जब अथीरापल्ली से निकले, पहले हम लोग गए चियप्परा वाटरफॉल। चियप्परा वाटरफॉल के पास में ही एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है वलारा वाटरफॉल, तो आप वो भी देख सकते हो। वलारा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग गए एक ऑर्गेनिक फार्म, जहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत सारे डिफरेंट प्लांट और उनकी एक शॉप भी थी जहाँ पे आप जाके ऑर्गेनिक स्पाइसेस की शॉपिंग कर सकते हो। चलो चलते हैं आगे। जब वाटरफॉल पे पहुँचते हैं तो मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। दिस इज चिराया वाटरफॉल। So here it starts. ये डिसेंट वाटरफॉल है। अगर मानसून में आओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। पानी थोड़ा कम था बट डिसेंट है, काफ़ी ऊंचाई से आ रहा था। आप इजीली यहाँ पे रुक सकते हो, हाफ एन आवर स्पेंड कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो दुकानें लगी हुई हैं देख सकते हो, कुछ खा सकते हो। वही है यार, इकोनॉमी बढ़ाओ देश की, शॉपिंग करो थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड वाटरफॉल पे। ये भी रास्ते में ही आएगा, इसके लिए भी कोई ज़्यादा ट्रैकिंग श्रैकिंग कुछ नहीं करनी पड़ती है आपको। सिंपल जाओ, देखो और आगे बढ़ो ना, तो वही है। तो थोड़ा थोड़ा जाते जाते आप थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप टाइम स्पेंड करो और आगे बढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन पे। यहाँ पे एक और वाटरफॉल है छोटा सा, नाम मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे को नाम नहीं पता क्या है इसका, इसमें लिखा तो हुआ नहीं है कहीं भी कौन सा वाटरफॉल है, बट ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। बट वही है कि समर है अभी, दो विंटर बोलते हैं अक्टूबर को, बट समर ही है ये, तो ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा, ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा, बट काफ़ी ठीक है, नाइस है। सी इट वंस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। आप 5-10 मिनट रुक सकते हो, देख सकते हो और आगे निकल सकते हो इस वाटरफॉल को। दिस वाटरफॉल इज़ बेसिकली नॉर्मल वाटरफॉल है यार, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। पहाड़ी है, ऊपर से नदी आ रही होगी, वो नीचे गिर रही है, बस दैट्स इट। कुछ उतना है नहीं है इसमें, ज़्यादा पानी भी नहीं है, तो आप देखना हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। कोई ऐसा कुछ खास नहीं है ना। मेरा काम था आपको दिखाना, मैंने दिखा दिया, और मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता है हर चीज़ देख के जाना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया ने बोला कि यहाँ पे एक स्पाइस प्लांटेशन है, आप विजिट कर सकते हो। आई एम फ्रॉम पंजाब सर। पंजाब, which district? आई एम फ्रॉम लुधियाना। Okay. So you worked in Punjab, huh? Yeah. Okay, how? In Gurdaspur district. Oh, गुरदासपुर है, नाइस। देखो भैया पंजाब में काम करके आए। देखो यार कितनी कितनी छोटी दुनिया है, कहीं भी कोई भी मिल जाता है। देखो तो ये पूरा प्लांटेशन है। Do you come? मुन्नार वैली इसका नाम है, राइट? Yeah. मुन्नार वैली करके प्लांटेशन है। You people can visit. It's a complimentary. Entry is free. After that, you can buy something, right? Yeah. Once you're done. Okay. Let's start from here. हाँ। सर मुन्नार वाली एक स्पाइस गार्डन है जहाँ जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स और स्पाइसेस का गार्डन होता है। यह तो एक ट्राइबल सोसाइटी का अंडर है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। आई थिंक यू माइट हैव heard about आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन originated from 5000 years ago. Ayur means life, Veda means knowledge. The knowledge of life is called Ayurveda. Okay? So ये टॉर्च जिंजर लिलीज। टॉर्च जिंजर लिलीज दो टाइप्स होते हैं, वन इज इन पिंक कलर, सेकंड इज वाइट इन कलर। Okay. This is which color? Pink in color. Pink in color. Okay. Okay, so after that flower, a bungee will come like this. Inside there are seeds. Those seeds are extracted for making
hair oil. Hair oil, okay. Along Okay. with the torch ginger, there are nearly 60 types of other ingredients is also blended with that oil. Means Neelambari, Bringaraj, Ayurveda, Kesavardhini, aloe vera, rosemary, curry leaf, spices, 60 types of ingredients. Okay. Get to prevent All these are for hair only. hair only. Okay, okay, nice. Okay. This is Tea plant. tea plant. Oh, okay. Okay, from the same plant, different teas are made. Okay. The finest quality of tea is called white tea. Okay. White tea contains a lot of antioxidants, so that it is used for anti-cancering, anti-aging properties. White tea. This one. The second leaf is called green tea. Green tea in our body metabolism increases and unwanted belly fat burn out. Ah, nice. Okay, these two leaves. Then early morning we have to boil the water. Put 2 or 3 leaves there. Then empty stomach. Empty stomach. Consume without sugar or milk. Okay. Then normal tea. Normal tea is सब कुछ crush करके grind. That black tea that we drink. Yeah, Okay. They crush all the grind this it, crush it, and 30 minutes oxidation. oxidize. Okay. Then after that, normal tea. Normal tea is prepared, which we put a lot of milk, sugar, and then we enjoy. Yeah. That one. Okay. The earlier one we don't enjoy, the green tea. Okay, nice. Very nice. Different species of hibiscus. Hibiscus flower. Yeah. Ah. And making shampoo. Oh, that's for the smell. Yeah. So this is Giloy. Giloy. Okay. We know that, yeah. Giloy is called Sarva Roga Nivarani. Means Sarva Roga Nivarani. It means that to prevent all kinds of diseases. Yeah, my parents drink a lot of Giloy and all, I know. Yeah. Especially for diabetic neuropathy, diabetic patients, uric acid, kidney related problems solve करने के लिए यो गिलोय use करते हैं. That is milk wine. A powder form is made from this for de-addiction. A person who consumes a lot of liquor and gets addicted, no? For what is it called in common language? Milk wine. Milk wine means vallipara. Vallipara. Okay, the taste of that powder is salt. So instead of salt. देख लो भाई, दारू छुड़ाने के लिए है ये. अगर बहुत ज़्यादा पीते हो तो मिल्क वाइन का पाउडर लो. Nice यार. Okay, so this can be used as a replacement of salt, they are saying, when powdered. It can be Taste is replaced. salty, it can replace the salt in your food. Oh, it can. Okay, salty, huh? Yeah. Oh, nice. And this get rid of a drinking person also, huh? Like drinking habit also. Yeah. Okay. Gradually they will stop consuming liquor. Ah. While they want to have some liquor, no, they feel vomiting sensation. Oh, once you had that. Yeah. खरीद लो भाई, खरीद लो. Okay. There is no need to tell about this. This we know, coconut tree. Yeah, coconut tree. Coconut we know. Yeah. This is eucalyptus, Nilgiri. Yeah, you know that. This one also we know. We have a lot of this in our home itself, next to our home. Now they got rid of this one because it consumes a lot of water, I guess. Underground water. That's why they get rid of this one. Safeda. It's called Safeda in Punjab. This is called Garcinia cambogia. In Hindi, it is called kokkam. Kokum. That tangy. Kokum drink, everybody drinks in Goa, na? Yeah. Coffees are of two types. One is Robusta. This is called Robusta. That is called Arabica. Okay. Then जब ये पक्के होने वक्त इसका कलर एकदम रेड कलर आएगा. जो ड्राई करके इसका छिलका निकालना with the help of the machine. Then inside there are coffee beans. After roasting the coffee beans, we'll get the fragrance. Okay. Now there is no smell and no smell, nothing. And how much time it takes to December harvesting time is December. Season December. So can we take some? You want? You want to taste coffee? But you don't drink coffee, na? It's okay. आप दोनों के लिए कॉफी बना सकते हैं. Oh, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है. When you reach at your home, you just make a cup of coffee for them. Okay. Vanilla. That beans it produce, Vanilla ना इसका ये एकदम बीच में एक bunch of flowers आ जाएगा. It cannot pollinate itself.
इसलिए हम मैन्युअली पोलिनेशन करना पड़ेगा, मैनुअल पॉलिनेशन मैन्युअली अर्ली मॉर्निंग। सो इसके बाद वो बीन्स आ जाएगा, वो बीन्स निकाल के स्टीमिंग करके 1 मंथ एक ब्लैंकेट में कवर करके ड्राई करता है। Like after that you will get seed out of that and black thing and it will become vanilla essence we are making from that. So that seed you put in what to make? Yeah, then if Water or no, if we make a tea now, then if we add a little quantity, we'll get the flavor of vanilla. vanilla. No, but okay, to make the flavor you put it in water or in what? That finally we get a liquid, right? Yeah, vanilla that liquid. Beans are also available there. Okay, Beans are also there available. Okay, but वो एंड में पानी में डाल के उसको फ्लेवर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? Help of the machine they extract that oil. Okay, oil they extract, then they mix it with some solvent and then they sell it in the market. Okay, it's like that. Okay. This is Shatavari. Shatavari, okay. Okay, Shatavari. In Ayurveda there are 3 basic supplements. One is Shatavari, second is Ashwagandha, third is Brahmi. The botanical name of Shatavari is Asparagus racemose. Okay, it has 100 roots. Shat means 100. Vari means roots. It has 100 roots. 100 roots for 100 medicines. Oh. Especially for females. Females reproductive system like uterus, ovaries and fallopian tubes. It's a blessing. Means to strengthen those organs. Shatavari use करता है. For menstruation disorder, irregular periods, over bleeding, infertility issues. Can you have a packet to keep it? Yeah. It's okay. We will buy it. We'll buy it. Okay. PCOD, white discharge, menopause. Means all kinds of gynecological problems solve करने के लिए शतावरी use करते हैं. Oh, nice. You have very good information, sir. Very good information, right? This is camphor, kapoor. Kapoor, okay. This is kapoor, huh? From this tree, an oil is made for migraine and sinusitis. Migraine and Sinus. sinus, okay. Okay. So we have to apply that oil before going to bed. We have to apply this oil. Then here is a pulse point. 8 to 15 drops. Apply there for continuously 41 days. Continuously 41 days. If we complete that course, definitely that problem can be cured. Okay, so nice. I don't know what the red is. Yeah. Look the shape of this leaf. Okay, what is it? It looks like a... It is just like a snake's tongue. Okay, that is why it is called Nagavalli. Nagavalli. Valli means It's like snake. yeah, that So when it grows, it is this color. that color. Red color. Yeah. Once it fully grown, it become green color. Okay. Yeah. Okay, Divi. Yes. Okay, let's go. That is Arjun ki chai. Arjun ki chhal, yeah. This is blood thinner, right? Yeah, It works as blood thinner. It means in our body there are 3 types of cholesterol. Arjuna chhal, yeah. Okay, HDL, LDL, VLDL. LDL and VLDL bad cholesterol. Okay, to reduce the level of bad cholesterol, Arjuna tree is used. Okay. And hypertension. Okay, for hypertension this is used. Triglycerides. Yeah, I know the name of all these plants because my parents use all these things only. They don't take normal medicine. They try to cure everything with these kind of plants and all. So Arjuna Chal I know. That's why. In our outlet there is no medicine for this. This is called the Indian birth water. Indian birth water for the treatment for snake bite. Snake bite, For okay. snake bite, this is the Indian birth water. So it is made from this leaves, huh? Okay, leaves. Okay, nice. Pineapple. Pineapple, yes, we have eaten pineapple, right? The plant. Oh, this is the plant for pineapple. Do you know, Divi? Yes. How you feel after knowing this? Good. Then इसका ये एक ना बीच में एक फ्रूट आएगा, वो फ्रूट के ऊपर ऐसे वाले एक और पौधा होता है, वो कटिंग करके रिप्लांट करता है. Okay, replant करता है. Okay. It is very sharp. Divi, don't touch it, okay? It's so cute. भी कट लग जाएगी. ये तो aromatic ginger, ठीक है? Oh, aromatic ginger, huh? Aromatic ginger for ये तो अदरक यूज करता है. हाँ. Just smell it. Smell करो. जिंजर लग रहा है. छोड़ो. So this is used in the
to give the aroma of ginger. All kinds of respiratory ailments this is used. Like asthma, allergy, bronchitis, cough, cold के लिए use करते हैं aromatic ginger. Okay, the root is used now. Adrak is used. This is not the actual ginger, right? No. Not actual ginger, no. That is another one. Just giving the This is just giving the aroma of ginger. Yeah. That is entirely Nice, different from this. nice. Yes, it is like that only. Yes, nice, very nice. This is called Idampiri Valampiri. Idampiri Valampiri is one of the ingredient for making hair oil. Oh, okay, this is also for hair oil only. One of the Okay. ingredient for hair oil. Can we see how it Very nice here. Uncle is very knowledgeable. So he might be giving it daily. So, but yeah, very nice. Come to me. Look, you are using eraser. Yes? is that rubber? Yeah, this is called a rubber tree. Ah, nice. Very nice, Divi. Can we see how the rubber? Okay, how then early morning we have to cut the chal, means bark. Okay. At that time a white color liquid is coming out, that is called latex. Latex, We okay. have to collect the latex, mix with the diluted sulfuric acid, then keep it for a while, it becomes solid or sheet. After that we have to dry it, then all kinds of rubber items are made. They put some plastic this thing around. Once you cut it, they put plastic this thing. For making From the there it come out and then you collect it in a bucket or bottle. Yeah. And that depend upon the quantity. Yeah. So I saw that outside also. Okay. Yeah, while coming they have a lot of rubber plant to collect. This is They were also collecting just like this white liquid. This is also just like eucalyptus. They also they are sucking ground. Okay. This is Very nice, sir. dalchini, Dalchini, okay. cinnamon. Cinnamon, okay. Oh, darling. Just to smell it. Okay, let me try it. Smell करना है. You can eat it also. It's, Okay, you why can not? eat, no problem at all. Yeah. Can I eat? I want to see. You wanna see? No, it's like cinnamon only, but little less flavorful as compared to what we get in the market. What happens? My tongue. This is a little light. This is mint tulasi. So all these are different kind of tulsis. Yeah. So in Karnataka mostly we get this one. In our Punjab we get. So in Karnataka you get Krishna tulsi, right? And in Punjab we get this one. This one, What is the name of this one? Mint tulasi. Bindu. Mint. Mind tulsi. Okay. बड़ा tough नाम है भाई, Mind tulsi. This is ashwagandha. Okay. Ashwagandha is called the king of Ayurvedic herbs. It is also known as Indian ginseng. Ginseng is one of the most important plants are grown in China. So if you tell about the name of ashwagandha, ashwa means horse, gandha means smell. The smell of the root is similar of the smell of a horse. That is why it is named as ashwagandha. Ashwagandha has many benefits. One of the foremost benefit is that it's a strong adaptogen. That is why anxiety, stress, depression दूर करने के लिए अश्वगंधा यूज़ करते हैं. मीन्स जो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल एक साड़ हार्मोन होता है, वो साड़ हार्मोन को वो कोर्टिसोल को कम करने के लिए अश्वगंधा यूज़ करता है. और इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. मीन्स ड्यूरिंग कोरोना सीजन नियरली 80% ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन अश्वगंधा. वाई बिकॉज इनको इम्यूनिटी पावर नहीं था. और नेक्स्ट वन इज दैट मसल्स एंड बोन्स स्ट्रेंथन करने के लिए अश्वगंधा यूज़ करता है. एपेटाइट बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए. मीन्स ओवरवेट को सपोर्ट नहीं करता है. ओवरवेट को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट टू प्रिवेंट द डिसीजेस लाइक हाइपरटेंशन, शुगर, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड इवन कैंसर. नेक्स्ट स्पेशली फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए और इनफर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व करने के लिए अश्वगंधा यूज़ करता है. दिस इज ब्लैक वासा या वातम कोल्ली, मीन्स पेन रिलीफ के लिए. ब्लैक बसा, ओके. गला के नीचे कहीं भी दर्द है तो अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है और हर्निएटेड डिस्क, लोअर बैक पेन, सायाटिका और आर्थराइटिस, इनके लिए एक ऑयल बनाया है. वो ऑयल हमने अफेक्टेड एरिया में लगा के जब वो ऑयल अब्सॉर्ब होने वक्त आयुर्वेदा में कहते हैं कि पोटली मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है. तो हवा में कोई भी ऑयल डाल गर्म करना,
गर्म करके वो पोटली डिप करके अच्छा से मसाज करना। मसाज करना। Okay? वेरी नाइस। Okay, this is Ayyapana for piles. Piles, okay. Okay. There are two types of piles. One is internal and external. Okay, internal means the patients को usually painless bleeding आएगा. External means lumps में भी फिर severe मस्से होता है. जब हम मेडिसिन यूज़ करने के टाइम वो naturally shrink करके relief मिल जाएगा. Okay. Piles. Ayyapana. This is Rudraksh. Hello, देखो Rudraksh. Oh, Rudraksh. Okay, this is the right time to see Rudraksh. Why? Because there are seeds. Okay, okay. Okay, seeds. Rudraksh का मीनिंग पता है? रुद्र means Lord Shiva, Aksh means Ansu, means from the tears of Lord Shiva, Rudraksh is made. Okay, according to Indian mythology. Okay, there are 1 से लेके 21 तक मुखीस होता है. एक मुखी सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी रुद्राक्ष माना जाता है और 5 मुखी सबसे लोकप्रिय रुद्राक्ष है. Okay. अगर वो 5 मुखी रुद्राक्ष असली है तो इसके बाद अंकल ने हमें दिखाया शुई मुई का प्लांट. इफ यू आर गोइंग टू टच दैट प्लांट इट विल क्लोज, मतलब कि बंद हो जाता है. अगर मान लो पत्ते खुले हुए हैं, अगर आप उसको टच करोगे तो वो बंद हो जाता था. तो काफी अमेजिंग लगा हम लोगों को ये देखने में. ये ब्रह्मी बक्कोपा मोनियरी. This is for mental power. या आयुर्वेदिक पर्पस में एक दिव्य औषधि है ब्रह्मी. ब्रह्मी बुद्धि के लिए वरदान है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन बूस्टर. और टू इम्प्रूव अवर मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, साउंड स्लीप, टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. ओके, ब्रह्मी यूज करता है. और टू प्रिवेंट द डिसीजेस लाइक OCD, ADHD, पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी. मेडिसिन नहीं है. टू प्रिवेंट दोस डिसीजेस ब्रह्मी इज यूज्ड. मीन्स इन हिंदी धी धृति स्मृति, ग्रहण करने के लिए शक्ति, धारण करने के लिए शक्ति, स्मरण करने के लिए शक्ति. ओके, कोको ओके ओके कोको जब पक्के होने दैट इज जब पक्के होने वक्त येलो कलर आएगा और तोड़ने के टाइम इसका अंदर जो सीड्स होता है. इट्स लाइक दैट. ओके, कोको बीन. ये कोको बीन फर्स्ट फर्मेंटेशन करना. फर्मेंटेशन करके जो ये स्किन निकाल के इसका अंदर होता है जो रोस्ट करेंगे, देन इट विल बिकम चॉकलेट. Once you this is good. Okay, the inside there is butter, no? That pulp. Pulp that is used for shea butter. Boy's rice cream. Okay, boy's rice cream. This is normal ginger. That is normal ginger. No, normal. That goes inside the root, right? Yeah. This ginger is in the root. Got it. Yeah. Because ginger, I like ginger in my tea especially. Very nice. Amba haldi. Yeah. Difference. It is not an edible one. Okay, to apply on our face to remove unwanted hair. Okay, especially ladies use. Okay, kasturi turmeric. Okay, kasturi turmeric, red sandal powder, aloe vera gel और rose water. पेस्ट करना, रात में फेस में लगाना, एक्सेप्ट आईब्रो. ओके, एक्सेप्ट आईब्रो. अदरवाइज इट इज eyebrow will also it will not come back. It will not come back. Oh, it will once not it's come gone. back. Okay. बाल चले जाएंगे. Yes. Okay. Once you remove hair using this turmeric, it won't come back. It won't come back. Oh man, nice. Okay, ये यूज करना, रात में यूज करना है. रात में फेस से अप्लाई करके जब ड्राई होने वक्त ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना. अगर ऐसे करते तो जो एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क शेड वो सब कुछ छोड़ के फेस ग्लो करने के लिए यूज करते हैं रेड सैंडल प्लस अंबा हल्दी. इंडियन बीड या स्टोन बनाना. Okay, it is also called stone banana. It is not a normal banana. Normal banana will get one bunch of banana within 1 year. But it takes 5 to 12 years to come out one bunch of banana. It just seems like ordinary banana, but inside there are hard seeds. Those seeds are extracted for making the medicine for kidney stone. Kidney. Okay, kidney stone के लिए that is stone banana use करते हैं. Cardamom. Oh, cardamom. Cardamom. Okay. Ilachi. Yeah, ilachi. It has two types of roots. Okay, one is normal root to grow.
This is called aerial root. Aerial root, first the flower appears. The flower turn into ilachi. This is the ilachi. Then in Kerala, this is called the pagaya. Oh, that Pagaya. seeds are there, no? I want. So how much time for this to turn to ilachi? Ilachi 2-3 months. 2-3 months. Yeah. But then you need to dry it out. Yeah. outside, right? Why? Because after taking out, we have to keep it in a dryer. ये लो आप ये Okay, electric dryer. Then it needs a 45 to 65 degrees Celsius to make it dry. From 6 kilo, we'll get only 1 kilo after drying it. Kerala, there are only 2 districts cardamom are grown. One is Idukki and second one is at Wayanad. Why? Because it needs plenty of rainfall as well as shade. That's why. I know climbing. You know climbing? But Okay. बच्चे because I could only climb on the branches. But there is no branch where water is But if very this spicy. big- Spicy. But if this big branch, my dad Very likes. spicy. He likes spice. Very spicy. Okay. I like it. It's a climber. Did you Yeah. climber It's a climber. Okay. It needs support to grow. I've heard about climber. Okay. There are. Money plant, and Okay. Then from the same plant, we are taking out 3 types of pepper. One is white pepper. Second one is a black pepper. Third one is that green pepper. Okay. After ripening, we have to put in a water to take out the skin. That is called white pepper. Okay. As it is dried, that is black pepper. So before ripening it, we are keeping in a dryer and making dry for green pepper. यार अंकल की नॉलेज बहुत खतरनाक थी. उन्होंने हमें इतनी चीज़ें बताई और मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो में काट दी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर मैं वीडियो में डालता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती. तो इनके पास एक फिर शॉप भी है, वहाँ पे जाके आप ओरिजिनल सामान भी खरीद सकते हो. और मुझे पता नहीं कि कितना ओरिजिनल होगा कितना नहीं होगा, बट ये लोग क्लेम करते हैं कि ये पूरा ओरिजिनल है, बट द कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको अगर कुछ लेना है तो आप ले सकते हो. तो ये रोड्स वगैरह और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग मुन्नार के अंदर जा रहे हैं. वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बारिश वाला सीन लग रहा है मुझे, बट लुकिंग वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. Oh man, so beautiful, right? देखो आगे, so nice, right? बारिश का माहौल है भाई, पूरा बारिश का माहौल है. वेदर इज वेरी गुड. अब हम लोगों को रेनकोट याद रखना पड़ेगा कि रेनकोट लेके ही जाएं हम लोग जहाँ भी जाएं, है ना. वी नीड टू मेक श्योर वी ऑलवेज गो आउट विद रेनकोट, बिकॉज यहाँ पे मौसम काफ़ी मस्त वाला है यार, काफ़ी जंकी मौसम है. जिस दिन हम लोग चेक कर रहे थे उस दिन भी मुन्नार में बारिश हो रही थी, आज भी मुन्नार में बारिश हो रही है. हर रोज़ इवनिंग में मुन्नार में बारिश हो रही है. तो वी नीड टू मेक श्योर वी आर कैरिंग अवर रेनकोट विद अस. देखो काफ़ी वो है यार, रेन काफ़ी तेज़ रेन है, काफ़ी जोर से हो रही है बारिश. सो गाइस, दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड. तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो. और इसके बाद हम लोग पहुंच गए होटल. तो होटल में जाके हम लोगों ने किया रेस्ट. चलो बाय बाय, टेक केयर एंड शबा खैर. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.